So class, let me start with the new topic, that is building RESTful services with Express. Okay, now first of all, I'll just tell you कि RESTful services क्या होती है. Okay, and the word RESTful is. So RESTful is basically a representational state transfer. Okay, so what is this? Actually, जब भी दो सिस्टम आपस में communicate करते हैं, उन दोनों को communicate करने के लिए we need a web services. Okay, and that web services is basically now known as REST. So REST allows us to uh, transfer the data between these two systems. Okay, और डेटा कैसे ट्रांसफर होता है? रेस्ट का यूज करता है, एचटीटीपी प्रोटोकॉल यूज करता है, और जिसकी हेल्प से डेटा एक दूसरे की से ट्रांसफर हो सकता है. और ट्रांसफर करने के लिए जो एचटीटीपी प्रोटोकॉल है वो एचटीटीपी मेथड्स का यूज करते हैं, जिन्हें हम एचटीटीपी वर्ब्स भी बोलते हैं. दीज आर गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट. नाउ इससे पहले, रेस्ट से पहले हम जो प्रोटोकॉल यूज करते थे, दैट इज एसओएपी, हम सोप बोलते थे, एंड डब्ल्यूएसडीएल. ओके, these are basically the two web services that are previously used in place of REST. But now these services have been replaced by REST. The reason is that जो SOAP प्रोटोकॉल होती थी वो XML फॉर्मेट का यूज करती थी डेटा ट्रांसफर करने के लिए. ओके, एंड जो REST है, that has a freedom to use any format. either वो टेक्स्ट फॉर्मेट यूज कर सकती है, JSON फॉर्मेट यूज कर सकती है, या XML फॉर्मेट यूज कर सकती है. Okay. Now, because the advantage of HTTP protocol is faster, and because JSON format is easily parsed, or it is even though compact as compared to XML, so that is also faster as compared to the SOAP. Okay, so now we use the REST over the SOAP protocols. Now, actually, what is the meaning of REST? RESTful API, that is a application program interface. It is basically a architectural style. Architectural style means which protocols, which rules are basically used to transfer data from one system to another system. Means web services को use करने के लिए जो हम एक architectural style follow करने वाले हैं, that is REST. Okay. और जो web services REST को use करती है for transferring the data, उन्हें हम बोलते हैं RESTful web services. Okay, now जो भी हमारा क्लाइंट होगा, जो भी सर्वर से रिक्वेस्ट करेगा, now and the server itself has to follow the uniformity and predefined set of rules of REST. Okay, now interaction in the REST based upon on HTTP protocol. That is a basic fundamental concept. Now जो RESTful systems होंगे वो कौन कौन से होंगे? एक तो होगा हमारा क्लाइंट जो किसी रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है, और एक होगा सर्वर who has to provide the रिसोर्स. तो आप देख सकते हो रेस्ट आपका यहाँ पर लाई करता है, रेस्ट एपीआई यहाँ पर लाई करता है. सो क्लाइंट एचटीटीपी प्रोटोकॉल की हेल्प से सर्वर से रिक्वेस्ट करेगा, एंड दैट रिक्वेस्ट इज नाउ सर्व्ड अकॉर्डिंग टू द रेस्ट एपीआई. हाँ, जब भी हम रेस्ट एपीआई की बात करते हैं, देन वी हैव टू follow the industrial standards. Okay, now which industrial standards now being used? That is the main basic of every REST API. Now what are the rules? अगर जब भी कम्युनिकेशन होगा, तो देन अगर वो रेस्ट वेब सर्विसेज के थ्रू हो रहा है, देन जो रिसोर्स होगा उसको, अगर आपको क्लाइंट को किसी रिसोर्स को चाहिए, तो उसको जो भी रिक्वेस्ट करेगा, जो एपीआई के थ्रू रिक्वेस्ट करेगा, इट शुड फॉलो नाउन. नाउन मीन्स, अगर आप ध्यान से देखें, हमने एक एग्जांपल दे रखा है, एपीआई स्लैश कस्टमर्स. नाउ दिस कस्टमर इज बेसिकली अ नाउन. अगर मैं इससे कंपेयर करूं इस यूआरआई से, तो आप देख सकते हो यहाँ पर स्लैश एपीआई क्वेश्चन मार्क टाइप इक्वल्स टू कस्टमर. इट मींस यहाँ मैं किसी रिसोर्स की रिक्वेस्ट कर रहा हूँ यूजिंग द रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी मेथड. So it is not a good way of defining the RESTful service. RESTful services always follow proper nouns. Now second बात करते हैं कि HTTP जो verbs होंगे वो हमारे रिप्रेजेंट करेंगे एक्शन, कि कौन सा एक्शन परफॉर्म करना है. So the verbs are get, put, post, delete, update, and fetch. Okay, now a web application should be organized into resources so that whenever the user requests for a particular
resource with a proper action, okay, then it is the responsibility of the developer that the request जो आई है it should be clean and it should be properly entertained by the server. वो कैसे सर्वर एंटरटेन कर पाएगा? देयर आर सम एग्जांपल्स. ओके, सपोज हमारी जो एपीआई की रिक्वेस्ट आई है वो यूआरआई से आई हुई है, ठीक है, तो सर्वर क्या चेक करेगा? यूआरआई क्या है, उसके कोरोस्पोंडिंग गेट क्या है, उसके कोरोस्पोंडिंग एचटीटीपी वर्ब कौन सा है. अगर आपका एचटीटीपी वर्ब्स गेट है तो इट मींस द यूजर इज इंटरेस्टेड टू सी ऑल द कस्टमर्स रिकॉर्ड. ओके, नाउ अगर अगर सेम ही एपीआई से रिक्वेस्ट आई है तो सर्वर चेक करेगा कि एक्शन कौन सा है. अगर एक्शन हमारा एचटीटीपी वर्ब्स का पोस्ट मेथड है तो इट मींस द यूजर इज इंटरेस्टेड टू क्रिएट न्यू कस्टमर. ओके, नाउ अगर यूआरआई हमारा कुछ इस फॉर्मेट का है, इट मींस देयर इज एन एपीआई स्लैश कस्टमर स्लैश समथिंग. समथिंग मींस देयर इज सम एडिशनल पैरामीटर. So that additional parameter combined with the HTTP action that will specify put. Put का मतलब होता है where the user is interested to update the previous customer detail with the ID 1. The ID 1, whatever the ID mentioned. Okay. Now, अगर same request आती है but action इसका delete है, it means the user is interested to delete that particular record. Okay, specified by the parameter. ओके, सिमिलरली अगर यूजर के पास यूजर इस एपीआई को हिट करता है और विद द एक्शन कॉल्ड गेट, इट मींस यूजर इज इंटरेस्टेड टू सी द रिकॉर्ड्स ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन स्पेसिफाइड बाय द पैरामीटर. सो ऑल दीज all these URL have to be plural. See, यहाँ पर आप देख सकते हो कस्टमर्स भी प्लूरल में, ये कस्टमर्स जितनी भी हमारी एपीआईज हैं उसके अंदर जो हमारे कस्टमर्स होंगे वो प्लूरल में होंगे, सो दैट वी कीप आवर एपीआई यूआरएल कंसिस्टेंट. सारे के सारे यूआरएल एक जैसे हों. ओके, सो दैट हम दिस इज वी कॉल्ड प्रॉपर रेस्टफुल एपीआई. अगर वो कंसिस्टेंट नहीं है तो इट मींस वी आर नॉट फॉलो द प्रॉपर इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स. सेकंड, जब भी यूआरएल जब भी कोई बैड रिक्वेस्ट आती है तो उसके कोरोस्पोंडिंग वी नीड टू सेंड अ प्रॉपर एचटीटीपी कोड. ओके, अगर अगर रिक्वेस्ट सही आएगी तो प्रॉपर हमें रिस्पांस स्टेटस कोड मिले. इट मींस रिस्पांस status codes are also very important when you are talking about RESTful API, because sometimes the user can check the developer tool and find out where is the issue, why my request is not fulfilled. अगर response status codes correct नहीं होंगे, so he's not identify why this error happens. Okay, now अब हम बनाने वाले हैं अपने RESTful APIs, पर उसके लिए हमें सबसे पहले एक एप्लीकेशन क्रिएट करना होगा, एक्सप्रेस एप्लीकेशन. एंड द वे ऑफ creation of an application is very easy. This is the same step we have been already followed. सबसे पहले we have to create a folder, then we have to create a package.json. Okay, now we have to install Express because we are interested in Express application, and then we have to create a index.js. Now entire code for creating the Express application we have already studied, so this is the same code. First we have to require the Express module, initialize the application and handle the basic route, and also listen the application of particular port. Okay, now after creating this app, now we can create APIs, but APIs को बनाने से पहले हमें पता होना चाहिए what are we are looking for. Actually we are looking for CRUD operations. Okay, uh, because every application having some CRUD operation in order to use RESTful services. Okay, and we know the C stands for create, R stands for update, read, and U stands for update, D stands for delete. Okay, now in order to perform all these CRUD operation, the HTTP methods can be used. A app.get means we are reading the data. App.post for creating new data. App.put for updating the previous data. App.delete for updating the any record in that application. So we will follow these methods. Now, in order to create the first two APIs, that is get and post,
आई एम टेकिंग टू यू टू द एडिटर, और यहाँ पर हम अपनी एपीआई क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम जो एपीआई बनाने वाले हैं, that is for handling the GET request. The user is interested to see all the records that are already there in that application. But here अभी तक हमारे पास कोई records नहीं है, कोई data नहीं है, तो how the user can uh, access that record? तो सबसे पहले हम कुछ records create करते हैं. We are going to create some data. तो सबसे पहले हम data तैयार करते हैं. We are creating create data. We are creating some data. So जब भी user किसी एक एपीआई को हिट करेगा तो उसको उसको एप्लीकेशन का सारा डेटा दिखाना है। तो हम कुछ डेटा तैयार कर लेते हैं। सो वी प्रिपेयर सम डेटा। सो हम कुछ कोर्सेज बना लेते हैं, ठीक है, कोर्सेज। ओके, नाउ तो इट इज एन एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स जहां पर हमारे कोर्स की एक आईडी होगी, सो एंड कोर्स का एक नेम होगा। इनिशियली वी हैव सम नेम्स, से HTML5. Okay, now let me duplicate this. So second will be CSS3. Third will be JavaScript. Fourth will be, say, Bootstrap. And fifth will be Node. हमने कुछ डेटा तैयार कर लिया। Now, अब हम एक एपीआई बनाने वाले हैं। जब भी यूजर उस एपीआई को हिट करेगा तो वो सारा का सारा एप्लीकेशन का डेटा उसको दिखेगा। कैसे बनाएंगे? सी, so here we are going to create an API for reading the available courses. Okay, so we use app.get for reading the records, and now we are creating the API with the courses. Now you will see this is initially the folder. Okay, this is not necessary that we have to use /API. So you can write anything or you can even discard this. Okay, now this thing is important. So the user is interested to see all the courses because we are handling the GET request. So GET means reading the records. Okay, now let me handle this request using the request and response object. Okay, यहाँ पर हम जब भी यूजर इस एपीआई को हिट करेगा तो जितने भी कोर्सेज हैं उसको यूजर को शो करना है। तो वी जस्ट सेंड response.send and we will send the entire courses. Send the courses. Okay, now in order to see the output, let me start the application. So application has been started. Let's hit the first the home route. जैसे वो home route पे click करेगा then there will be a response generated by the server that request to the express server. That is okay. Now let me hit the API /courses. Now this is the API. Okay, this is the domain address, this is the API, and this is the courses. So when the user hit on this API, the user will the server can respond back with all the courses available. So see, जब मैं इस पे API पे hit करता हूँ, I'm a user, I'm hitting that API, तो user को क्या मिलते हैं? जितने भी available courses हैं वो सारे उसको दिख रहे हैं। But I think you are not expecting the courses in the JSON format. हाँ, but क्यों? क्योंकि user जब हम हिट करता है तो उसको डेटा जो मिलता है प्रॉपर्ली टेबल्स की फॉर्म में मिलता है या लिस्ट की फॉर्म में मिलता है। बट हियर आई एम एक्चुअली एक्सप्लेनिंग हाउ वी कैन यूज द एपीआईज फॉर रीडिंग द डेटा। ओके, सो आई एम जस्ट ओनली इंटरेस्टेड इन हिटिंग दैट एपीआई, तो इसलिए आपको डेटा ऐसा दिख रहा है। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज इफ द यूजर इज वांट्स टू सी अ पर्टिकुलर रिकॉर्ड, अगर किसी यूजर को एक पर्टिकुलर कोर्स को देखना है, कोर्स के बारे में जानना है, ठीक है, तो इफ द यूजर हिट ऑन दिस एपीआई देन यहाँ तो सारे शो हो रहे हैं। बट अगर आप किसी एक पर्टिकुलर कोर्स को दिखाना चाहते हो तो हम अपनी एपीआईज में थोड़ा सा चेंज करते हैं। तो नाउ आई एम गोइंग टू डुप्लीकेट दिस। नाउ एपीआई फॉर रीडिंग द स्पेसिफिक कोर्स, स्पेसिफिक कोर्स। अब स्पेसिफिक कोर्स को कैसे हिट करेंगे? यूजर क्या करेगा? एपीआई को इस तरीके से हिट करेगा। नाउ व्हाट इज दिस?
दिस कैन बी एनीथिंग, दिस कैन बी एनीथिंग। अगर यूजर को कुछ हम एपीआई पे कुछ एडिशनल डेटा भेजते हैं, एडिशनल पैरामीटर भेजते हैं, दिस इज अ वे ऑफ सेंडिंग द एडिशनल पैरामीटर्स, और मैं यहाँ पर आईडी पास कर रहा हूँ, बिकॉज इन द कोर्सेज देयर विल बी अ यूनिक आईडी फॉर एवरी कोर्स जो मैंने असाइन किया 1 2 3 4 5। सो जब भी यूजर किसी ना किसी एक रिकॉर्ड्स के ऊपर स्क्रॉल ऑन करेगा या डबल क्लिक करेगा, तो उस पर्टिकुलर रिसोर्स को देखना चाहेगा, तो उस पर्टिकुलर रिसोर्स को देखना चाहेगा, तो हम इस तरीके से अपनी एपीआई को कॉल करेंगे। तो यहाँ पर आईडी का मतलब क्या है, जो भी उस कोर्स का आईडी होगा, और मैंने इसको कुछ इस तरीके से लिखा है, तो हम इसे पैरामीटर पासिंग बोलते हैं। तो जब भी पर्टिकुलर पैरामीटर पास होगा, तो यूजर तो सर्वर को सिर्फ एक ही रिकॉर्ड को दिखाना है, एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड को दिखाना है। तो कैसे दिखाएगा, तो हम यहाँ पहले कोड्स को फाइंड आउट कर लेंगे, सो वी कैन क्रिएट अ रेफरेंस ऑफ कोड्स। और वो कोड्स कहाँ से मिलेगा, कोर्सेज के बीच में से मिलेगा। सो कोर्सेज डॉट फाइंड, अगर उसको कोई एक पर्टिकुलर कोर्स मिल जाता है, तो वो इसको चेक करेगा कि इसकी जो आईडी है, जो उसको कोर्स मिला है, द सी डॉट आई डी इज इक्वलेंट टू, नाउ हियर आई विल एक्सप्रेस रिक्वेस्ट डॉट parameters, params dot id dot id. Now what is this, what is this request dot params? This is basically the parameter you have passed. Whatever the parameter you pass, you can access that parameter using this params. Now मुझे एक particular id को access करना है, that's why I'll mention dot id. But because यहाँ पर मैं triple equal to use कर रहा हूँ, triple equal to means they are comparing the data with its data type, and this data is actually a string. This data actually, when whatever we write on the address bar is return string. So मुझे इस data को convert करना पड़ेगा integer में. Now if I entered id1, okay, if I entered id1, and that id1 will be compared with the course id, with the course id. अगर वो match कर जाती है, तो आपको तो कोर्सेज रिटर्न हो जाएंगे, स्पेसिफिक कोर्स रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। अगर आपसे मैच हो गया तो कोर्स रिटर्न हो जाएगा। बट मे बी यूजर ऐसे कोर्स को ऐसी एपीआई को हिट करता है विद पैरामीटर्स दैट कोर्स इज नॉट अवेलेबल। लाइक हमने अभी 5 कोर्सेज बनाए हैं, बट यूजर हो सकता है 6 कोर्स को एंटर कर दे, 7th को कर दे, या ऐसे किसी कोर्स को एंटर कर दे जो अवेलेबल नहीं है। उस केस में हमें उसको एक प्रॉपर रिस्पॉन्स देना होगा, बिकॉज इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सर्वर दैट इफ द यूजर गेट सम रॉन्ग source that is not available, and that is it is have to be reply back. Okay, हम क्या करेंगे, अगर यूजर जो कोर्स देखना चाह रहा है that course is not available, that course is not available, okay, तो उस केस में क्या बोलेंगे, यूजर को रिस्पॉन्ड भेजना है हमें with a proper status code, say I'm writing 404, that is the resource not available, with the message that the course you are you are looking for is not available, is not available. Okay, so this will be the if the course is not available, this will be the response back with the proper status code. And if the course is available, yes, at that time the user will get the that particular course. Okay, now one thing is noted that here the course is singular because I'm looking for a particular course. At that time आप जो variable बनाएंगे that will be a singular. See, अगर course available नहीं होता तो ये मैसेज आएगा, अगर course match हो जाता तो course ही return होगा, and that course will be find out in the available courses. Okay, so this is an important thing you have to keep remember. Okay, so हम यहाँ पर इसको सेव करते हैं and let's see the application. अगर मैं यहाँ पर इस API पे किसी ऐसे यूआरएल पे हिट करता हूँ, से 2 और 3 और 4, सो देखो मैं 2 पे हिट करता हूँ, मुझे एक पर्टिकुलर कोर्स मिल रहा है। ओके, अंडरस्टैंड, बट मे बी इट हैपेंड द यूजर hit on a resource that is not available. Suppose I entered 6 and 6 is not available. At that time the user will get a this response, the course you are looking for is not available, and at the same time the user will also get a response. See,
4 or 4. The requested resource is not available. So this is the status code you have to send back. Okay, and this is a respond message. Now अगर आपका रिसोर्स अवेलेबल है से 4 तो अवेलेबल है, सी यहाँ पर उसको कोड्स का नाम मिल गया और आप देख सकते हो यहाँ पर हमें 200 मिल रहा है. 200 का मींस होता है द स्टेटस कोड मींस yes the resource the user is looking for is available. Okay, that's why 200 okay is there. Okay, so so we have created these two APIs जहां पर हमें कोर्सेज सारे कोर्सेज मिल रहे हैं या अगर यूजर इज इंटरेस्टेड टू गेट अ सिंगल कोर्स वो भी मिल रहा है. नाउ एट द सेम टाइम इफ द यूजर हिट्स एट यूजिंग अ पैरामीटर रिसोर्स दैट इज नॉट अवेलेबल, तो उस केस में हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है विद द प्रॉपर स्टेटस कोड. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट गेट मेथड.